Hello students, good morning. I am DK sir in class 7, Lakshmi Nagar Vidya Mandir, Sitamarhi. The topic is in class 7 mathematics, properties of circle. For the circle, we draw here a figure of the circle. This is a round figure. We can call it a circle is curved closed figure. This is the curved closed. This is the curved closed figure, and we round it as it. A circle is curved closed figure. This is the first property of the circle. The second one is it has a center. Center is in the middle point. Is the middle point of the circle. Total area occupied by the center, and from the center, this is a circumference. All the radius, length of all the radius are equal. It has a center and distance between center and boundary. This is the boundary. A, B, C, D in the rounded figure is the boundary of the circle is same to the all points. It means in Hindi इस पॉइंट से इस सर्किल के पॉइंट से जितने भी रेखाएं हम ले जो इसके किसी भी पॉइंट को जोड़ेगा, all the lines in the length are equal. सभी का लेंथ जो होगा वो बराबर होगा. For the next AB is a diameter twice of radius of O और OB. यहाँ लिखते हैं AO और OB. इसका twice AB. This is the diameter of the circle. OA बराबर OB बराबर OC. In हिंदी we call it त्रिज्या. इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस को त्रिज्या कहते हैं. यहाँ से OB, OC और OA सभी की माप क्या होती है? बराबर होती है. नेक्स्ट द P is an exterior point. कभी कभी देखते हैं पूछ देता है कि where is the P established? P estimated. P exterior मतलब ये जो सर्किल है ना, इसके आउटएरियर में एक्सटीरियर पार्ट में जो पॉइंट लाइज है, या इसको हम एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं. आफ्टर दैट P is the interior point of the circle. Inside the circle it is the P. After that BC is a chord. BC like here BC. BC is the chord. There are many chords may be in a circle. We draw chord, many chords, indefinite chords in the circle. जितना भी चाहे सर्किल में chord रख सकते हैं. बट सबसे जो लंबा chord होता है, the longest chord AB as a diameter. chord जो होता है सबसे लंबा, सबसे longest chord को एक नंबर के क्वेश्चन में मल्टीपल chord पूछा जाता है. The longest chord of the circle, what is it called? The name is diameter. After that ABCD को मैंने ऐसे लिया. ABCD taken as the sign. It means ABCD is the circumference of the circle, boundary line of the center. Boundary line of the center is called the circumference. After that CB, arrow का sign मैंने लगाया ऐसे. देखिए ऐसे it means anti-clockwise. जब आप ऊपर की तरफ से जाओगे 9, 10, 11, 12 में तो वहां पर आपको मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज साइन. इट मींस माइनर आर. इधर से इधर गया माइनर आर नीचे से. अगर इसी को ऊपर से कर देते हैं क्लॉकवाइज, सीधा ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, सीधा मेजर आर. इट मींस इसका मेजरमेंट यहां से ऐसे करके ऐसे, बट माइनर आर का मेजरमेंट यहां से करके ऐसे. ओके. आफ्टर दैट सम formula related to the circle, area is equal to pi r square, circumference is equal to 2 pi r, that you will know, and central angle is 360 degree, radius is equal to d upon t. D is the diameter of the circle, and diameter is the QR, where r is the radius of the circle, and pi taken 22.7 and 3.14. Thank you, Mandev. Last day, next training, next class.